Hey guys, this is Suraj Soni and you are watching chemSTAR. So guys, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई भी केमिकल का कोई भी एसिड का अगर आपको क्वांटिटी दिया गया है और आपको बोला गया है कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को आपको इतने ml में डिज़ोल्व करना है और डिज़ोल्व करने के बाद आपको उसका pH फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल चलिए हम मान लेते हैं कि अगर हमें बोला गया है कि आपको हाफ ग्राम्स HCl लेना है और उसको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है, डाइल्यूट करना है और उसके बाद आपको उस सॉल्यूशन का pH फाइंड आउट करना है। तो आप ये कैसे करेंगे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर क्वांटिटी आपको मालूम है तो आप उसका pH कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आखिरी तक देखिए और अगर समझ में आता है, ऑब्वियसली समझ में आएगा ही आपको, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। चलिए फटाफट एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द पीएच ऑफ 0.5 ग्राम्स ऑफ HCl डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। अगर आपको 0.5 ग्राम HCl दिया हुआ है और आपसे कहा जाता है कि इसे 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व करना है, उसके बाद आपको जो सॉल्यूशन मिलता है और उस सॉल्यूशन का आपको पीएच फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है आंसर के लिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड मोल्स ऑफ एसिड। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 ग्राम्स ऑफ HCl। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 0.5 ग्राम HCl में मोल्स कितने होते हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसके लिए कि मोल्स का फॉर्मूला क्या है। सो मोल्स इज नथिंग बट मोल इज नथिंग बट ग्राम्स बाय मोलार मास। तो अगर हमें मोल्स फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जो ग्राम्स हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम उस एसिड के मोलार मास से डिवाइड कर देंगे, हमें उसका जो है मोल्स मिल जाएगा। ऑलराइट, सो फॉर फाइंडिंग आउट मोल्स वी कैन सिंपली डिवाइड द गिवन क्वांटिटी by the molar mass. All right, so here we have given 0.5 grams of HCl, so simply I have written here 0.5, all right, grams of HCl. And the as we know the molar mass of HCl, so let's write here molar mass of HCl. As we know the molar mass of H is 1 and the molar mass of Cl is 35.5. So if we total this we will get 36.5. So simply we will divide it. Let's use the calculator for dividing it so that we can get a perfect answer of this question. Alright, so we have to divide 0.5 by 36.5. Alright, so we are getting here 0.0136. Alright, 0.0136. So simply we will write here 0.0136. What we have got now? We have got now is moles. So we can say that 0.5 grams of HCl is nothing but 0.0136 moles of HCl. Alright, so we can say 0.5 grams of HCl is equivalent to 0.0136 moles of HCl. Alright, so next step 2 is to find molarity. Once we know the moles, then we have to use that mole quantity to find out the molarity, and after that we simply find out the pH with the help of the formula. Okay, so second step is to find the molarity. So here the formula for to finding out the molarity is nothing but moles by volume in liter. All right, but here we have given solvent quantity as 100 ml. All right, in the question is 100 ml. All right, so just we need to write here the moles quantity. So here mole we have got is 0.0136. हमें मोल का क्वांटिटी कितना मिला है 0.0136, यहाँ पे लिख देंगे हम। और हम जो है वॉल्यूम जो है हम 1000 से इसको डिवाइड करते हैं। ऑलराइट, सो सिंपली वी हैव टू डिवाइड इट बाय 0.100. ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट वी विल गेट. So here if we solve this we will get 0.0136 divided by
0.100. What we will get? We are getting here as 0.136. all right, so here we are getting 0.136 of molarity. So we have got the molarity of 0.5 grams of HCl. So for finding out the molarity, whenever we are trying to find out the molarity, we have to divide the given moles by 0.100. all right, so we will get the molarity. So here we have the molarity 0.136 for 0.5 grams of HCl. So after that, let's see the third step. Third step is to understand the reaction. What is happening in the reaction? Okay, so what is happening here? HCl, when get dissolved in water, what we are getting? S3O plus Cl minus we are getting, and we have to find out the acid, we have to find out the pH. So we have our interest is in S3O plus. okay, so we know that HCl is a strong acid. all right, whenever we dissolve any substance in water, if it completely dissolved, so we can say that that particular substance is strong. okay, strong acid if it is acid, and if it's completely dissolved and it is base, then we can say it is a strong base. all right, so HCl is a strong acid, completely dissociates in water, because since HCl gets completely dissociated in water, we can say HCl is a strong acid. all right, so therefore the pH will be equals to the negative logarithm of the concentration of HCl. all right, so here we have the formula for finding out the pH. So formula for finding out the pH is equal to minus log to the base 10 into the concentration of S3O plus ion. So here we have concentration in molarity. all right, here in the question we have grams. okay, here in the question we have grams. We have find out the grams. We have converted the grams into the molarity. all right, so it is very important to find out the pH. For finding out the pH, it is very important to convert a grams into the molarity. okay, so here we have got the molarity. Here we have got the molarity as 0.14. all right, so if we find out the pH of this, then we will get, let's see how we can find out with the help of calcium. Minus log, where is log? Here, minus log to the minus log 0.14. okay, so we will get here as 0.85. all right, so here we are getting the pH as 0.85. all right, so here we have got the pH as 0.85. so friends, I hope आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा. ओके, सो हियर you can see out of 4 options you have to tick the correct one. all right.